Today we start new chapter respiration in organisms. Let's start with introduction. How do you think we breathe and get energy from the food we eat? We get energy from food through a process called cellular respiration, which uses oxygen we breathe in. This process, occurring in the cells of our bodies, breaks down food molecules, like glucose, to release energy. Inhaled oxygen is crucial for this breakdown, and carbon dioxide is a byproduct that we exhale. Respiration is the process by which living organisms break down food, usually glucose, to release energy. This energy is used by the organism to perform various life functions such as growth, movement, and reproduction. During respiration, oxygen is typically used to help break down the food, and carbon dioxide and water are produced as byproducts. There are two main types of respiration: aerobic respiration, which requires oxygen, and anaerobic respiration, which does not require oxygen. Here's how the food we eat is turned into body fat. The journey begins in the mouth, where food is broken down mechanically through chewing and enzymatically by saliva, initiating the breakdown of carbohydrates. From there, the food travels down the esophagus and enters the stomach, where gastric juices further break down the food into smaller components. As the partially digested food leaves the stomach, it enters the small intestine, where the majority of nutrient absorption takes place. Enzymes from the pancreas and bile from the liver assist in the digestion of fats, proteins, and carbohydrates. These nutrients are broken down into their simplest forms: glucose from carbohydrates, fatty acids from fats, and amino acids from proteins, to be absorbed through the intestinal wall into the bloodstream. Glucose is the body's primary source of energy. Once absorbed into the bloodstream, it is transported to cells throughout the body. Cells utilize glucose for immediate energy needs, or store it in the liver and muscles as glycogen for future use. However, if the body's glycogen stores are full, or if glucose intake exceeds energy expenditure, excess glucose is converted into fat through a process called lipogenesis. Triglycerides synthesized in adipose tissue are stored in fat cells until needed for energy. When energy demands are low, such as during periods of rest or when calorie intake exceeds expenditure, the body signals adipose tissue to store excess energy in the form of triglycerides. These triglycerides accumulate in fat cells, leading to an increase in fat mass and body weight over time. Let's compare aerobic and anaerobic respiration. First, oxygen. Aerobic respiration needs oxygen to occur, while anaerobic respiration happens without oxygen. Next, energy. Aerobic respiration produces more energy, whereas anaerobic respiration produces less energy. Now, the end products. In aerobic respiration, the products are carbon dioxide, water, and energy. In anaerobic respiration, the products can be lactic acid in humans, or alcohol and carbon dioxide in yeast. What about where it occurs? Aerobic respiration is common in most plants and animals, including humans. Anaerobic respiration is found in yeast, some bacteria, and human muscles during heavy exercise. And finally, location in the cell. Aerobic respiration takes place in the mitochondria, the powerhouse of the cell. Anaerobic respiration occurs in the cytoplasm. So, both types of respiration help release energy, but in different ways and different conditions. Air first enters the body through the mouth or nose and quickly moves to the pharynx or throat. From there, the air passes through the larynx or voice box and enters the trachea. The trachea is a strong tube that contains rings of cartilage that prevent it from collapsing. Within the lungs, the trachea branches into a left and right bronchus, which further divide into smaller and smaller branches called bronchioles. The smallest bronchioles end in tiny air sacs called alveoli, which inflate during inhalation and deflate during exhalation. Gas exchange is the delivery of oxygen from the lungs to the bloodstream and the elimination of carbon dioxide from the bloodstream to the lungs. It occurs in the lungs between the alveoli and a network of tiny blood vessels called capillaries, which are located in the walls of the alveoli. Here, you see red blood cells traveling through the capillaries. The walls of the alveoli actually share a membrane with the capillaries. That's how close they are. This makes it possible for oxygen and carbon dioxide to diffuse or move freely between the respiratory system and the bloodstream. Oxygen molecules attach to red blood cells, which travel back to the heart. At the same time, the carbon dioxide molecules in the alveoli
are blown out of the body with the next exhalation. Gas exchange allows the body to replenish the oxygen and eliminate the carbon dioxide, both of which are necessary for survival. Exchange of gases in plants. Plants are stationary, so their energy requirement is less, and the process of respiration is slower as compared to that of the animals. In plants, all parts like root, stem, and leaf perform respiration. The process involves exchange of carbon dioxide and oxygen. The gases are exchanged by the process of diffusion. In leaves, gases enter through the stomata. After the gases enter a leaf, intercellular gas exchange takes place. This occurs in the air spaces between the spongy mesophyll. During respiration, plants make use of the oxygen which is released during the process of photosynthesis. A product of respiration is carbon dioxide, which is utilized for photosynthesis. Thus, photosynthesis and respiration go on simultaneously in a plant. Photosynthesis can only occur during sunlight hours, so it stops at night. But respiration occurs throughout the day and night, providing the plant with a supply of energy. Thus, at night, more CO2 is eliminated. Therefore, it is advisable not to sleep under a tree at night. Do you know, like leaves, the gas exchange also occurs in stems and roots? The stems of woody plants contain lenticels, which are loosely packed cells that permit exchange of gases. In roots, gas exchange occurs across the moist membranes of the root hairs and other epidermal cells. रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं बदलता है। गैस का एक्सचेंज समान ही रहता है। ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज होता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है कि ये किस तरीके से किया जाता है। हम देख चुके हैं कि ये मनुष्यों और पौधों में कैसे होता है। तो चलिए इस सेशन में डिस्कस करते हैं कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स या पानी में रहने वाले जानवरों में कैसे होता है। हमारे डाइजेशन के एक ट्यूटोरियल में हमने अमीबा की स्ट्रक्चर को देखा था। हम जानते हैं कि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो ताजे पानी में रहता है। इसके पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए कोई खास ऑर्गन नहीं होता है, तो इसलिए अमीबा में रेस्पिरेशन उसके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑक्सीजन गैस सेल मेम्ब्रेन द्वारा शरीर के अंदर डिफ्यूज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसपास के पानी में आसान डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा बाहर निकाली जाती है। ये अलग था, है ना? लेकिन ग्रास हॉपर्स और कॉकरोचेस जैसे कीड़ों के बारे में आपका क्या कहना है? इनके पास भी लंग्स नहीं होते। इनके पास सांस लेने के लिए छोटे एयर ट्यूब्स का एक सिस्टम होता है जिसे ट्रैकिए कहा जाता है। ट्रैकिए ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके शरीर के साइड में छोटे पोर्स द्वारा खुलते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन से भरी हवा इनके शरीर में स्पाइरेकल्स के द्वारा प्रवेश करती है और ये पूरे शरीर में ट्रैकिए के नेटवर्क से पास होती है। फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये फिर इसी ट्रैकिए के नेटवर्क के जरिए बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन हवा इनके अंदर और बाहर कैसे आती जाती है? एब्डोमेन और विंग्स की मूवमेंट ट्रैकिए से हवा अंदर और बाहर करती है ना अद्भुत? तो क्या आप बता सकते हैं कि अर्थवर्म्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? इनमें भी रेस्पिरेशन के लिए कोई खास ऑर्गन नहीं होता। अर्थवर्म्स में रेस्पिरेशन उनके सॉफ्ट और गीले स्किन के जरिए होता है। उनके स्किन के नीचे ही ब्लड कैपिलरीज होती हैं। स्किन द्वारा अब्सॉर्ब की गई गैस ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और फिर ब्लड के सभी सेल्स को भेजी जाती है। इस तरह से डिफ्यूजन होता है। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को फूड के ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हो जाता है और उनके गीले स्किन के जरिए बॉडी से बाहर डिफ्यूज कर दिया जाता है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन रुकिए, ज्यादातर मछलियों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये गिल्स, जो कि स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके जरिए होता है। अब हवा के मुकाबले पानी से ऑक्सीजन को प्राप्त करना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए मछलियों के पास स्पेशल सिस्टम्स होते हैं। कुछ मछलियां पानी में मौजूद लगभग 80% ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। एब्जॉर्ब किया ऑक्सीजन फिर खून के जरिए बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है और फिर खून के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स तक वापस लौटाया जाता है। अंत में गिल्स अपने जरिए पास होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रिलीज कर देते हैं। इसे हम डिटेल में अलग ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, जहां हम सिर्फ मछलियों में रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे।
खैर, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिनमें अलग अलग तरीकों से रेस्पिरेशन होता है।